नाम संजय है। ओके, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मीटिंग हो गई मंत्री जी से, हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी है, वो रिव्यू कर रहे हैं। सॉरी, Who do we designate you as, sir? हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, And your name, sir? संजय खजूरिया। थैंक यू। During the meeting, you have given your representation दे दी सर आपने। बिना माइक पे एक मिनट बात कर लो। संजय जी, So journalists, they're trying to get a reaction from Sanjay Khajuria, head of corporate affairs, Nestle. सॉरी आई कांट से। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। They've just had their meeting with the Delhi government. A decision has been taken to stop the That's sale all I of can Maggi say at this products. stage. Thank you very Sir, can much. you please repeat what you have said? हम मंत्री जी से मिले, हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, वो रिव्यू करेंगे। और सर Thank you. सर जो रिप्रेजेंटेशन टाइम लिमिट सर। I'll call you guys. सर चलो ठीक है। So Sanjay Khajuria, head of corporate affairs, they've met the Delhi government, they've made their representation. We'll get you details of what their side of the story is. But so far, the government's taken a decision to ban the sale of Maggi products at Kendriya Bhandars. Kerala has already taken a similar decision. It will not be sold in any government outlets across Kerala. Uttar Pradesh has said that action will be initiated against Maggi after lead and MSG were found beyond permissible limits in their samples that were collected, and a trail has been established clearly, not just from the local shops but also from outlets like the Easy Day. Once very favorite instant food of many people across the country, Maggi noodles is now in midst of a raging, boiling controversy. 7 of 13 samples collected in Delhi were found to be unsafe. The Arvind Kejriwal government has decided to initiate action against Nestle. The meeting with top officials, as you just saw, is now over. The sale of Maggi has been stopped in Delhi's Kendriya Bhandars. What we're also being told that the Future Group, which is Big Bazaar, they've also decided to stop the sale of Maggi at its outlets. The official statement says not just in Delhi, Maggi samples across the country are facing intense scrutiny. Kerala has decided to ban the sale of Maggi in 1,000 government outlets. The states like Karnataka, Gujarat, West Bengal, they've sent samples for testing. Rajasthan and Bihar have ordered investigations. Cases have also been now filed against superstars Amitabh Bachchan, Madhuri Dixit and actor Preeti Zinta for endorsing Maggi. A case against Nestle has been filed in Uttar Pradesh. Amidst this raging controversy, it's the Goa Food and Drug Administration that has said that samples that they have collected and tested are safe and to stop the sale of Maggi noodles for the time being. We have not banned it in the entire state, only in the government outlets. We have taken this decision based on the controversies that has been coming up in a few days now. A lot of many complaints are coming from different corners. One second, yeah. 1 second. Sir, what happened in the meeting today? सर क्या बातचीत हुई आपकी मीटिंग में? So we met the minister. यार आराम से आराम से आराम से। Yes, sir, you continue. So we met the minister. We have made a representation. They are going to review this, and then we'll get to So know. what did you mention in your presentation? सर क्या बात सर हिंदी में क्या बात है, आराम से। हम मंत्री जी से मिले, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन उनको दी है, वो रिव्यू कर रहे हैं और हमें बता दें। सर आपने क्या बात रखी है? सर आपकी तरफ से बात क्या रखी है? सर आपने बात करना था ना। सर अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय है। ओके, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? सर डेफिनेशन हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। The consumption of Maggi, one of the favorite products of half of the nation, has taken a bad hit. I am standing in the Sri Satnarayan Bhandar in Jaddu Babu Bazaar, one of the most renowned shops here in Kolkata.
Most importantly, there are Maggi packets at the display, but that's because the company has paid for the display, not because the selling of the shelves. It has had a great impact and of course a great hit, that I would say. Let's talk to a few people and what do they think about it. What is your take on the fact, the Maggi report, that the government has now taken cognizance of? Firstly, Maggi is a product that you mostly consume when you run out of cooked food in your fridge. But right now, I'm best avoiding it. Avoiding it. What is your take on it? I don't think it will have any problem because it was an old story, right? So I don't think it has any problem right now. I consume it. I have no problem with it. Most of the people consume it, but what is your take on it? Do you still consume it? If so, why? And if not, why? Yeah, see, 2 minutes of Maggi actually gave us a 2 minutes. It was the best way to eat our food and whenever we were hungry. But it didn't take 2 minutes to break our heart because of the lead content and everything. So we say no to Maggi. Simple as that. A no to Maggi. What is your take on it? No, I don't consume Maggi. I never tasted it even. Oh, never tasted it. So not too much of brand loyalty. But as far as the consumers are concerned, not many of them appreciating the fact that it has had lead content and of course dangerous contents in it that were dangerous. And of course, the whole sale and consumption has taken a big hit as far as Kolkata is concerned. With camera person Tapas Berry, this is Manogya Loiwal in Kolkata for India Today. The Maggi controversy has really sparked off that that bigger question about the kind of food safety standards that are catered to by a lot of these packaged products that have in fact flooded the markets. Two ladies here in Delhi's North Campus of Delhi University really buying fresh vegetables. सब्जियां तो बड़ी तरोताज़ा लग रही हैं, तो मतलब खाने का खास ध्यान रखती हैं आप परिवार वालों के लिए कि स्वास्थ्य उनका ठीक रहना चाहिए? हाँ, कोशिश करती हैं। और क्या, मैगी का तो अभी आया, पहले थोड़ी ना कुछ था। आप खुद खाती हैं मैगी? मैं तो रोज खाती हूँ। कभी आपको नहीं लगा कि उससे हेल्थ पर असर पड़ता है? मुझे तो नहीं लगा। चिंता नहीं होती है कि अगर आप मैगी खाते हैं, इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं, ये जो पैकेज प्रोडक्ट्स आते हैं पास्ता वगैरह की, उसमें कहीं नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, कहीं हेल्थ कैलोरीज ज़्यादा ना हो, क्या ये सब चिंताएं होती हैं? ना कभी कभी खाते हैं क्योंकि शॉप पे होते हैं, खाना वाना घर जाके बनाते नहीं शाम को, तो कभी खा लेते हैं, कभी नहीं भी खाते। कोई रेगुलर वो नहीं है, रूटीन नहीं है। तो अभी इस वक्त क्या कोशिश कर रही हैं कि बच्चों को थोड़ा कम दे मैगी? बच्चों ने छोड़ दिए, 3 महीने हो गए, वैसे छोड़ दिए। अच्छा, बच्चों ने अपनी मर्जी से छोड़े, उन तो जिम जाने लगे तो छोड़ दिए मैगी उसने। तो मतलब अगर जिम जाते हैं तो उनको लगता है कि मैगी फिर हेल्दी नहीं है? लेकिन वही है ना, कोई कहते हैं कि मैदा वैदा मत खाओ, जिम वाले भी कहते हैं, सभी कहते हैं। ब्रेड हो, मैदा हो, ब्राउन ब्रेड खाओ, वो बताते हैं ब्राउन वैरायटी लो। It's basically the white flour content that perhaps people are a little bit apprehensive about. मैम आप बताइए, आपके घर में आप खुद मैगी खाती हैं? हम कैंटीन से लाते हैं, मिनट की कैंटीन से लाते हैं सामान। घर में बनाते हैं, हमारे आज भी बनी है। पर ये गवर्नमेंट पहले क्यों नहीं शुरू करती? पहले तो शुरू कर देगी, फिर उसके बाद जब कंप्लेंट आती फिर बंद कर देती। शुरू से नहीं बंद कर, ऐसी चीजें पहले तैयार करनी चाहिए ना, कैसे चल रही है। और दूध भी पैकेट में आ रहे, दूधों में क्या है? पर भारत में ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो मिलावट की प्रॉब्लम है या फिर खाने की क्वालिटी सही नहीं होने की प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है, सबको बीमारियां, सब बीमार रह रहे हैं। क्या ना खाएं, क्या ना खाएं, सब में मिलावट है। सब्जी गोभी कभी देखी थी, मटर कभी देखे थे, सीजन के सब कुछ मिलावट में आ रहा है। मतलब ये सब्जियां भी हो सकता है कि इसमें भी कहीं कोई इंजेक्शन हो, कहीं कुछ लगा हो? अच्छा, सब में है। यार देयर टू किड्स यार, बच्चे इधर आना जरा। आपका क्या नाम है? अलका। अलका और संगीता। संगीता, आप लोग मैगी खाती हैं? हाँ। पसंद है मैगी खाना? हाँ। क्या माँ बाप ने कभी बोला है कि मत खाया करो, अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए? बोला है, पर फिर भी खाते हैं आप लोग? क्यों, चिंता नहीं होती है? नहीं। आपको चिंता होती है? नहीं। आप लोग क्या दौड़ धूप करते हो, स्पोर्ट्स करते हो? यस। तो उसमें आपको लगता है कि मैगी might just affect your health or all of these instant fast food might affect your health? No. You don't feel so, why? No. पर आप खाना कंटिन्यू करेंगी? Yes. अच्छा ठीक है, आपके हाँ और ना में जवाब दे रही हैं. So clearly, you know, people perhaps not sure if there should be a knee-jerk reaction to this entire controversy, or it should really lead to perhaps the government trying to ensure there are more stringent, in fact, steps taken to ensure standards of the kind of food that people not just get to buy off the shelves in retail stores, in supermarkets, or even the ones that are provided in dhabas, canteens and street side shops. In New Delhi, with video journalist Satinder Bhati, this is Smita Sharma for India Today.